Hello everyone. Today I welcome you all into the next lecture of our chapter number 2, that is number system. इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो हमने प्रीवियस सेक्शन में समझे कि अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग नंबर सिस्टम होते हैं जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं। अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि हम एक नंबर को जो कि एक नंबर सिस्टम में है, ओके, उसे दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि कोई बाइनरी है जो डेटा हमारा डायरेक्टली कंप्यूटर में स्टोर होता है, हम उसे अपनी ईजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, इसे हम सीखेंगे। पहला हमारा टॉपिक है इसमें कि हम डेसिमल को, जो कि हमारी नॉर्मली हम जिस फॉर्म में नंबर्स को देखते हैं, उसे किसी और नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। इसके चार स्टेप है। कोई जो भी हमें नंबर दिया है उसे डिवाइड करना है बाय द बेस वैल्यू जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, और रिमाइंडर को नोट डाउन करना है। और इसको स्टेप नंबर 3 है, इसको डिवाइड करते जाना है। जब क्वेश्चन को डिवाइड करते जाना है बाय द बेस वैल्यू जब तक हमारा क्वेश्चन जीरो तक रीच नहीं कर जाता। ओके, हमारा पहला टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी। सो लेट्स नॉट सी द टॉपिक, डायरेक्टली एग्जांपल समझते हैं इसे। लेट्स सपोज हमें करना है 31। ओके, इस टाइप से 31 लिख लेंगे हम, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें डेसिमल को, ये डेसिमल है हमारा, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब इस साइड जो है हम अपना सारा रिमाइंडर्स लिखेंगे। ओके, लेट्स डिवाइड 31/2। 31 डिवाइड बाय 2 इज 15, है ना, एंड द रिमाइंडर इज 1। हम रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे। अगेन लेट्स डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा क्वेश्चन है वो अभी जीरो पे रीच नहीं किया है, तो हम इसे फिर से करेंगे। 15 डिवाइड बाय 2 2 इज 7, रिमाइंडर इज 1। देन अगेन डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 इज 3, रिमाइंडर इज 1। देन 2 डिवाइड बाय 2 3 डिवाइड बाय 2 इज 1, एंड द रिमाइंडर इज 1। ओके, देन अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे बट इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा, देन इसे 0, रिमाइंडर 1 आ गया एंड इट्स 0। सो इस वाली साइड अब जो हमें नंबर्स मिले, इसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, फ्रॉम बॉटम टू अप। ओके, हमें ऐसे लिखना है। अब ये जो 31 है जो कि बेस 10 में है, ओके, इसकी वैल्यू होएगी बेस 2 में, बेस 2 में फ्रॉम बॉटम टू अप। ओके, पहले हम बॉटम लिखेंगे 1, देन 1, देन 1, देन 1, देन 1। ओके, हमारा डेसिमल वैल्यू बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। सी हाउ सिंपल इट इज। यही एक एग्जांपल यहाँ भी ऐसे ही दिया है। जैसे कि 65 को कन्वर्ट किया गया, 2 से डिवाइड किया 65 को, 32 आया, ना रिमाइंडर इज 1। देन 32 को डिवाइड बाय 2 किया, 16 आ गया, एंड द रिमाइंडर इज 0। देन 8 4 2, रिमाइंडर इज 0 0 0, एंड देन 1। ये रिमाइंडर इस चीज का है। ओके, देन 1, एंड द 1 रिमेनिंग इज हेयर। ओके, 1 2 3 4 5 5, yeah, it's correct. 65 with base 10 is equal to this number base 2. Okay, so now we know how to convert a decimal value into not decimal value, a base 10 or yeah, base 10 value to binary number. Okay, so now let's come to the next topic, that is decimal to octal. लास्ट में हम डेसिमल टू बाइनरी कर रहे थे इसलिए डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, अब ऑक्टल में कर रहे हैं तो हम डिवाइड बाय 8 करेंगे। इतना सिंपल सा डिफरेंस होएगा। ओके, लेट्स कन्वर्ट, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल 31। ओके, 31 को हमें कन्वर्ट करना है। 31 को डिवाइड बाय 2 किया, हमारे पास आया, सॉरी नॉट 2, 8, हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 8 से डिवाइड किया तो हमारा आया 24 3। ओके, 3, देन द रिमाइंडर इज 24 7। ओके, अब हमारा 8 0 एंड 3। हम सिमिलर टू हमारा लास्ट एग्जांपल, हम इसे बॉटम टू अप लिखेंगे लाइक दिस। 31 in decimal is equal to 3, then 7, 73 in base 8. One example is also written here, that is 65, which is in decimal, is converted into octal. So we divide by 8, 65 divided by 8 is 8, remainder is 0, then divide by 8, remainder is 1,
then 0. Remainder is 0 because 8 divided by 8 is 1 and the remainder is 0. Then again 1 divided by 8. Now our question becomes 0 and our remainder becomes 1. So 65 is 101 in octal. Okay. Now you can also like if you want to check if your answer is correct or not, we will learn it into further section. Okay, so let's start with a new subtopic, that is decimal to hexadecimal conversion. So hexadecimal is base 16, so हम base 16 से divide करेंगे, जैसे कि यहाँ example दिया है. Let's change the values and do it here. 31, 16, so it is 1, then 16 and 15. Okay, 15 is the remainder here, then 16, our remainder is 1, then 0. Okay, so you guys will say like it will be something like this: first 1, then 15, base 16, but it is not, because hexadecimal values use value digits from 0 to 9, then A to F. So 15 will be equivalent to F. So instead of 15 1, we will write F1. F1, not I. F1 16. Okay. One example is written here: 65 divided by 16, which is 4, remainder 1. 16, 4 divided by 16, remainder 0, and quotient becomes 0. Remainder 4, sorry. Yeah. So this is how we can convert any like decimal value to any other number system by dividing their base. Now we will move on to the next topic, that is conversion from other number system to decimal. ओके, सो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा पोजीशन नंबर दिया होगा हर एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल का एक नंबर में, उस पोजीशन को राइट डाउन करेंगे और उस पोजीशन को जो है पावर में रेज कर देंगे पोजीशन नंबर से. ओके, मे बी ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ओके, जैसे कि एग्जांपल दिया, इन्हें सॉल्व करते हैं. सबसे पहला है डेसिमल वैल्यू. ओके, हमारा पहला टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल. सो इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. अब इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लास्ट से स्टार्ट करेंगे और इसकी वो लिखेंगे पोजीशन. इसकी पोजीशन है 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5. यस. सो अब हम इसे थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखेंगे, जैसे कि इसकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब राइट से. ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द पावर, जो कि इसकी पोजीशन वैल्यू है 5. ओके, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4, पोजिशनल वैल्यू 4 है. देन 0 इंटू 2 टू द पावर 3, बट it will be 0, so let's skip this. Then 2 to the power 2, because positional value is 2. Then we can also skip this 0. Then 1 into 2 to the power 0, so it will be 2 to the power 5, 32. Then 2 to the power 4, 16. 2 to the power 2, 4. Then 2 to the power 0, 1. So 16, 32, 16, 4 and 1. This is really 20, 12, 52, 53. So now we have converted 110, 101, which is of the binary number or base value 2, into 53, that is of base value 10 और decimal number system. So see how simple it is. यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया है, एक डिजिट दिया है 1101, इस पे भी आप एग्जांपल कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको समझाया भी, पोजिशनल वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, 0 देन 1 देन 2 देन 3. फिर इन पोजिशनल वैल्यूज को सॉरी पोजिशनल नंबर्स को 2 की पावर में ले रहा है, क्योंकि ये नंबर जो है ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी का बेस 2 होता है. ओके, सो फिर इनको इनसे मल्टीप्लाई किया डिजिट से और ऐड कर दिया, सिंपली हमारा एक आंसर आ गया. फिर अब ऑक्टल को हम अगर डेसिमल कन्वर्ट करें, ओके, बाइनरी के लिए हमारा बाइनरी का बेस होता है 2, इसलिए 2 की पावर में पोजिशनल नंबर जाता है, बट ऑक्टल के लिए बेस होता है 8, सो 8 की पावर में रहेंगे, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है. लेट्स इरेज दिस and move on to the next one. 1703. So you guys might think कि मेरे को कैसे पता है ऑक्टल है. ये मेरे को इसलिए पता है ऑक्टल है क्योंकि इसमें यहाँ नीचे लिखा है 8, which is denoted for base value. Okay, so let's write it down again. 1703. Let's write down the base value, that is from right to left: 0, 1, 2, then 3. Okay,
सो अब हमें बेस वैल्यू पता है और हमें डिजिट्स भी पता है। अब हम इसे लिखेंगे जैसे कि अगर आपको सिंप्लीफाइड वे में समझना हो तो इस टाइप से आप इस टाइप से आप टेबल भी बना सकते हैं। बट अब हम बड़े हो गए हैं, हम 11th में आ चुके हैं, सो हम इतना इजी तो हमें नहीं चाहिए होगा। सो हम अब स्टार्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये एक ऑक्टल है, सो 8 टू द पावर पोजिशनल वैल्यू सॉरी नंबर 3। ओके, then 7 into 8 to the power 2, 0 we can skip cause it will be 0, then 3 into 8 to the power 0. Okay, so this value will be 8 to the power 3. I will have to take out my calculator for this. 8 into 8 into 8, that is 512. 512 multiplied by 1 is 512. Okay, plus 8 square, that is 64, multiplied by 7 will be 448, plus 3 into 8 to the power 0 will be 1, so 3 into 1 will be 3. So after adding all this, 1 plus 3, it will be 963. Okay, so now we have converted 1703, which is in the octal format, into decimal format, that is 963 value. Okay, if you guys want to practice all this, you can just randomly try some questions, and if you want to check if they are correct or not, you can just search on Chrome that binary to decimal converter. If you want to practice and all, you can try use that. Okay, so now we know how to convert from octal to decimal. Next will be hexadecimal number to decimal. Now the base again increases to 16। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ओके, सो नाउ वी हैव नंबर सी जीरो सॉरी C0F5। ओके, हमें इसे कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट पोजिशनल नंबर, दैट इज 0 1 2 एंड 3। ओके, सो first we will see we can see C. So C denotes value 9, then 8 10 11 then 12. Okay, so C denotes 12 in hexadecimal. Okay, you can remember it like this: 0 to 9 holds the same value in hexadecimal, okay, in the base 16. Then after A, B, C, D, E, then F. These denotes 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, in this way you can remember their value for conversion. For denotion, you will always use letter alphabets. Okay, so 12 into positional value 3, so 16 to the power 3, plus 0 multiplied by anything will be 0. So next is F. F is 15 multiplied by 16 to the power 1. Then 5 into 16 to the power 0. 16 to the power 0 will be 1. So we will simply write 5. So after calculation, that is 16 into 16 into 16 into 12, it will be a very big number, 49152. You guys will definitely need a calculator for all this. Then 15 into 16 will be 240 plus 5. So now this number will be something like this. Okay, so now C0F5, C0F5 in base 16 is equal to the value 49,397 in the decimal. Can you guys see how short it is when that number is converted into hexadecimal? How easier it looks, but it is not. So now we know hexadecimal. So for this lecture, we'll learn all this, and next two subtopics we will learn in the next lecture. Okay, thank you. See you. Tata. Bye bye.